Welcome students. In this video we're going to discuss metallophorphyrins. Metallophorphyrins itself consists of two words. First is metal and next is phorphine. So we may define metallophorphyrins are metal complexes with phorphine ligands. Now, what are these phorphine ligands? Phorphine ligands are macrocyclic compounds in which four pyrrole units are joined together through methane bridges. Okay. So let us first draw the structure of pyrrole unit. This is the structure of pyrrole. Okay. In this pyrrole ring, the lone pair of nitrogen itself contributes in the resonating structure. So pyrroles are heterocyclic compounds which are aromatic in nature. Now we have already discussed that phorphine ligands are macrocyclic compounds of four pyrrole units. So let us draw these four pyrrole units. This should be drawn in this manner only. And these are joined through methane bridges. So each corner represents the methane group. In this phorphine ring consists of conjugated system. So let us draw the double bonds. First double bond, then single, as we want to draw conjugated system. Single, then again single, double, single, double, single, double, single, double. In this manner, we're going to draw all the double bonds. Now nitrogen has a valency of 3, we know. So 1, 2, third would be H. In this 1, 2, 3 completed. 1, 2, third would be H. 1, 2, 3 completed. So here we completed the structure of phorphine ligand. This is our phorphine ligand. Now these phorphine act as tetradentate ligands with 4 nitrogen donor sites. 2 of these nitrogens are tertiary donor position, that is this and this. They form coordinate bonds via its electron pair. These donates its electron pair to metal atom and form a coordinate bonds. And the other 2 nitrogens are secondary in nature. They may lose their hydrogen atom and form a di-negative anion and form metal complex bond. Therefore, this phorphine ligand act as a tetradentate, but tetradentate ligand and also di-negative ligand. So it will form complexes with those metal ions having di-positive charge on them. For example, magnesium 2 plus ions, Fe 2 plus ions, nickel 2 plus ions, or cobalt 2 plus ions. If we want to make metal ligand, phorphine ligand complex, so the metal should be placed here and these are the coordinates bond and these make normal bonds and the H are removed from these sides. Now this is the structure of metal phorphyrine complex, or we can say that this is the structure of metallophorphyrine in which phorphine ligand is bonded to metal atom. This metal phorphyrine complex, the metal ion of appropriate size will be surrounded by 4 nitrogen of pyrrole ring in a square planar geometry, and the axial sites, that is these 2 sites, are vacant, which will be available for the other ligands.
So let us discuss some of the metalloporphyrins in our syllabus, that is heme. Heme is a metalloporphyrin in which the metal is Fe2 plus. So let us draw the structure of iron porphyrin complex. This is the same structure. In the center, Fe2 plus ion is present, and following are the substituents added on the porphyrin ligand. CH3, then again CH3, CH doubly bonded CH2, CH3. These are the substituents present on the porphyrin ring in heme group. So this is the complete structure of iron porphyrin and is known as heme. Heme is present in both hemoglobin as well as in myoglobin. Now the word hemoglobin itself also comprises of two words, heme and globin. Globin, as we all know, is protein. So if we want to draw the structure of hemoglobin, so we simply need to attach a globin, that is protein chain, in the heme group. This protein chain is present on the axial bond. This can be drawn as such. This is a histidine unit. So the iron at its fifth position is connected to the histidine unit of, this is the imidazole side chain, of imidazole side chain of a long protein chain. The structure of hemoglobin and myoglobin are both similar, but they are not completely identical. As I have already told you that heme is present in both hemoglobin and myoglobin. So the basic difference is only in the globin chain, that is in the protein chain. So let us discuss some differences between hemoglobin and myoglobin. Then we'll going to explain the whole structure of these two. So I have write some differences. In hemoglobin, it consists of 4 heme groups joined to 4 peptide chains. And in myoglobin, there is only one heme group connected to one peptide chain. So if you were asked for the structure of hemoglobin, then you can draw the structure as we explained, but you have to write that it consists of 4 heme groups joined to 4 peptide chains. You have to draw only one heme group and one peptide chain, and the rest you will have to write. In hemoglobin, out of the 4 peptide chains, 2 peptide chain consist of 141 amino acids and 2 peptide chain consist of 146 amino acids. That is, these peptide chains which have 141 amino acids, they are known as alpha chains, and the chains having 146 amino acids, they are known as beta chains. This is one amino acid we have drawn in the structure. This is one amino. And in myoglobin, the peptide chain consists of 150 to 160 amino acids. Next point, the iron atom present at the center of the heme group. This would be same, as we know that it is a complex of iron porphyrin. So iron is as the metal. Next point, these 4 chains we have discussed, 2 alpha amino chains and 2 beta chains. These are coiled together to form 3-dimensional structure. This is also known as tertiary structure of hemoglobin. And the globin chain is folded about single heme group, as there is only one heme group and one peptide chain, so it is folded upon this heme group. So both hemoglobin and myoglobin have the same structure. So if you were asked for the structure of hemoglobin, then you have to write that it is only one subunit
and there are 4 similar types of subunits which contribute a structure of 1 unit of hemoglobin. And you have to explain all the points which I have already mentioned. And for the structure of myoglobin, you just need to draw this and you need to mention all these points. We can't completely draw the structure of hemoglobin because these such bulkier 4 groups joined together to form 1 unit of hemoglobin, but we can completely draw the structure of myoglobin as it has only 1 unit of this porphyrin complex and 1 unit of this protein chain. Myoglobin may be oxy and deoxy. The word oxy is used if the oxygen is connected through the 6th position. So we have completely draw the complete structure of oxymyoglobin. This is the complete structure of oxymyoglobin. And if oxygen is not linked on the 6th axial position, then it will be the structure of deoxymyoglobin. Now I am going to revise all the structure and the theory behind it from your books. So these are metalloporphyrins. हमने यहाँ से यही पढ़ा था कि पोरफायरिन्स हमारे मैक्रोसाइक्लिक रिंग्स होती हैं जिसके अंदर 4 पायरोल रिंग्स होती है जो कि लिंक्ड होती है थ्रू मीथेन ब्रिजेस. दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेटालोपोरफायरिन एंड सिंपल पोरफिन लिगेंड. 4 हमारे पास पायरोल रिंग्स हैं, चारों की चारों मीथेन ब्रिजेस से कनेक्ट हैं. इनके अंदर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम है. 2 नाइट्रोजन हमारे पास टर्शरी हैं एंड 2 नाइट्रोजन हमारे पास सेकेंडरी हैं. क्योंकि ये 2 H लूज करके डाई नेगेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, दैट इज वाई दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद मेटल्स हैविंग 2 पॉजिटिव चार्जेस. सो नेक्स्ट हमारे पास था हीम ग्रुप. हीम ग्रुप हमारा क्या था? मेटल पोरफायरिन था जिसमें आयरन आपका मेटालिक पार्ट शो करता है. हीम ग्रुप में हमारे पास ये हमारी पोरफायरिन रिंग है, मेटल हमारा आयरन है एंड हमारी पोरफिन रिंग पे लिगेंड पे बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होते हैं. ये आपको एज सच लर्न करनी है. ये हमारा स्ट्रक्चर है आयरन पोरफायरिन सिस्टम. देन हमने पढ़ा था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन. अब ये देखिए हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन बोथ दोनों के लिए आपको एक सिमिलर स्ट्रक्चर ही दे रखा है. आप जब एक्सप्लेन करोगे तो सबसे पहले आप इसमें यही बताओगे कि हमारे पास 4 पायरोल रिंग्स होती हैं A B C D. ये मिथाइलिन ब्रिजेस से लिंक्ड होती हैं. देन इनके अंदर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम प्रेजेंट है. ये हमारे पास सारे सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं एंड जो हमारी एक्सियल पोजीशन है एक ऊपर और एक नीचे ये वेकेंट होती है. ये हमारा हीम ग्रुप था. हीम ग्रुप में जब हमारी ग्लोबिन चेन अटैच हुई, हम अभी मायोग्लोबिन की बात कर रहे हैं. मायोग्लोबिन में ये हिस्टिडीन हमारा रेसिड्यू है एंड ये पूरा का पूरा इमिडाजोल हिस्टिडीन हमारा ये पूरा रेसिड्यू है एंड इमिडाजोल यूनिट के थ्रू ये लिंक्ड है एंड ये पूरी प्रोटीन चेन आगे कंटिन्यू होती है. ठीक है, ये हमारा हीम प्लस ग्लोबिन हीमोग्लोबिन पार्ट. बट हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है? ऐसे ऐसे 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड वो आपस में कॉइल्ड होते हैं और टर्शरी स्ट्रक्चर बनाते हैं विच इज इम्पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन 2 डायमेंशनल शीट ऑफ पेपर. सो हमने यहाँ पे मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है. तो ये हमारा मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होगा क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक ही यूनिट रहता है हमारे आयरन पोरफायरिन का एंड प्रोटीन चेन का. अगर 6th पोजीशन हमारी ऑक्सीजन के थ्रू लिंक्ड होती है तो उसे हम ऑक्सीमायोग्लोबिन कहते हैं एंड अगर यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती तो सिर्फ इतने स्ट्रक्चर को हम डीऑक्सीमायोग्लोबिन कह सकते हैं. फिर आती है टर्न हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर की. आप देख सकते हैं हीमोग्लोबिन की मैंने आपको कहा था कि 4 ऐसे सब यूनिट्स होते हैं एंड उनकी 4 चेन्स होती हैं. वो चारों चेन्स सिमिलर नहीं होती, डिफरेंट होती हैं. 2 अल्फा होती हैं, 2 बीटा और वो आपस में कॉइल्ड अप हो जाती हैं. तो अगर हम उनको ड्रॉ करना चाहें तो हम हीमोग्लोबिन का ऐसा टर्शरी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा सकते हैं. ठीक है,
एंड इसमें वही सब एक्सप्लेन किया है जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब हम अपना बायोलॉजिकल रोल पढ़ते हैं हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन पिक्स अप ऑक्सीजन इन द लंग्स एंड डिलीवर टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। मेन फंक्शन हीमोग्लोबिन का हमारा यही है कि ये ऑक्सीजन कैरियर की तरह काम करता है, ये ऑक्सीजन कैरी करता है और हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स पे सप्लाई करता है। एंड देन मायोग्लोबिन हमारे मसल्स में प्रेजेंट होता है, वो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन ले लेता है एंड उसे तब तक अपने पास रखता है जब तक हम कोई एनर्जेटिक प्रोसेस नहीं करते। जब हम कोई भी एनर्जेटिक प्रोसेस करते हैं तब मायोग्लोबिन से ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है, हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज करती है। सो हीमोग्लोबिन एक्ट एज ऑक्सीजन कैरियर इन आवर ब्लड एंड मायोग्लोबिन एक्ट एज storage system for this oxygen. So here we completed the structures of hemoglobin and myoglobin. Same is the structure for chlorophyll. In chlorophyll, for firing ring system, the metal is magnesium and this is the amine residues present in chlorophyll complex. So you have to learn this also. Now I am going to discuss the important cycle, role of hemoglobin and myoglobin. मैंने आपको पूरा बता दिया है एक बार शॉर्ट में, बट ये कंप्लीट मैकेनिज्म एक्चुअल में होता कैसे है। ये साइकिल हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है। सबसे पहले हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ जाती है? हमारी लंग्स में। लंग्स के थ्रू हमारी एल्वेओलाइज होती हैं जिनके थ्रू हमारी ऑक्सीजन ब्लड के कॉन्टैक्ट में आती है, HB। और हमने यही कहा था कि हीमोग्लोबिन कैरियर का काम करता है ऑक्सीजन कैरी करने का। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड हुई एंड इट फॉर्म्स HbO2। ठीक है, यही HbO2 देन हमारे मसल्स में, मैंने आपको बोला था क्या होता है, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन से ये ऑक्सीजन ले लेता है, ये शो कर रखा है प्रोसेस, एंड ऑक्सीजन लेके MbO2 कॉम्प्लेक्स बना देता है। देन जब हम एनर्जेटिक प्रोसेस करते हैं, इवन हम सांस भी लेते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं एंड CO2 एक्सहेल करते हैं। आपको आपकी रेस्पिरेशन रिएक्शन पता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन आपकी कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है एंड वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। सो यहाँ जब रेस्पायर करते हैं हम तो ऑक्सीजन हमारी यूटिलाइज होती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की जनरेशन होती है। देन यही कार्बन डाइऑक्साइड हमारी जो हीमोग्लोबिन्स में जो पेप्टाइड चेन्स लगी होती हैं उनका बहुत बायोलॉजिकल फंक्शन है। ये पेप्टाइड चेन क्या करती हैं, अभी हम आगे मैकेनिज्म पढ़ेंगे। इन्हीं की वजह से ऑक्सीजन 6th पोजीशन पे अटैच होता है एंड जब ये ऑक्सीजन ट्रांसफर कर देती हैं तो जो इनके यूनिट्स हैं, रेसिड्यूज हैं, जो हमने नीचे पढ़े थे, इमिडाजोल, हिस्टिडीन, ये सब, इन पे ही CO2, कुछ यूनिट्स में CO2 ऐड हो जाती है और वापस उसको ब्लड में लेकर आती है। ठीक है, तो वो कैसे होता है उसका मैकेनिज्म। CO2 जब हम एक्सहेल करते हैं, जब हम हमारी रेस्पिरेशन के दौरान निकलती है, देन वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O विच इज प्रेजेंट इन अवर ब्लड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोनोइक एसिड में। अब कार्बोनिक एसिड भी फर्दर इक्विलिब्रियम में ही रहता है, दोबारा से कार्बोनिक एनहाइड्रेस के साथ एंजाइम, ये इक्विलिब्रियम इसका हीमोग्लोबिन के साथ है, ये H पॉजिटिव देन हीमोग्लोबिन के साथ अगेन बाइंड एंड देन फिर ये इक्विलिब्रियम उसको कैरी कराता है एंड H2 लूज अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस। फिर से हमारा कार्बोनिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो सकता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड भी कार्बोनिक एसिड में इक्विलिब्रियम रहती है एंड कार्बोनिक एसिड का भी कार्बन डाइऑक्साइड में, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, दोनों डायरेक्शन में एंजाइम काम करता है। देन कार्बन डाइऑक्साइड हमारी इस तरह से लंग्स तक पहुंचती है वापस एंड उसे हम एक्सहेल करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ऑक्सीजन हमारी जब हम इनहेल करते हैं, ब्लड हीमोग्लोबिन ब्लड के साथ कंबाइन करती है, देन फिर टिश्यूज के पास आते ही मायोग्लोबिन के साथ क्यों कंबाइन कर देती है और हीमोग्लोबिन से ब्रेक क्यों हो जाती है। तो वो सब काम है हमारे प्रेशर का। जब हम ब्रीथ करते हैं, यहाँ पे ये लाइंस इंपॉर्टेंट है, यू शुड लर्न दिस। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई इन अवर लंग्स सो दैट O2 बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन फॉर्मिंग HbO2। हमारे हीमोग्लोबिन के साथ अगर ऑक्सीजन को बाइंड करना है तो वहां पे पार्शियल प्रेशर हाई होना चाहिए, तभी वो हीमोग्लोबिन के साथ हाई प्रेशर पे बाइंड कर सकती है। और वो हाई प्रेशर हमारे लंग्स में होता है 100 टोर का जब हम ब्रीथ करते हैं। बट जैसे जैसे हम टिश्यूज के पास पहुंचते हैं वहां पे जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 20 to 30 टोर होता है, विच इज वेरी लेस। वहां पे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं कर सकती और वो डिसोसिएट हो जाती है एंड देन डिफ्यूज हो जाती है टिश्यूज में। और मायोग्लोबिन की कैपेसिटी है कि वो कम प्रेशर पे भी ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लेता है।
दैट्स वाई हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट होके ऑक्सीजन जब टिश्यूज में आती है तो मायोग्लोबिन के साथ अटैच होती है और ऐसे हमारी पूरी रेस्पिरेशन की साइकिल चलती है. इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजनेशन एंड द रेस्ट ऑफ दिस चैप्टर.